हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमबीए कैट 2019 इंग्लिश सेक्शन पैसेज 2। एमबीए कैट 2019 इंग्लिश सेक्शन पैसेज 2। फाइन, चलो गिव मी अ मिनट, आई प्रेजेंट द स्क्रीन। आई बिलीव द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ठीक है, चलिए, फाइन। Free of the taint of manufacture, that phrase in particular is heavily loaded with the ideology of what the Victorian socialist William Morris called the anti-scrape or an anti-capitalist conservationism, not conservatism, that solaced itself with the vision of a pre-industrial golden age. ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं कि जो एंटी इंडस्ट्रियल बिलीफ था, हाँ, वो विलियम मॉरिस ने बताया एंटी स्क्रेप था। एंटी स्क्रेप मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो बॉट सिस्टम है, बॉट जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है उसको नलीफाई कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। सोलिस इटसेल्फ विद द विजन ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इन ब्रिटेन folk may often appear a cozy fossilized form, but when you look more closely, the idea of folk who has the right to sing it, dance it, invoke it, collect it, belong to it, or appropriate it for political or cultural ends has always been contested territory। मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जो ब्रिटेन फोक थे, ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटेन के लोग थे, वो फॉसिलाइज थे। मतलब क्या, एकदम ऐसे शांति से रहते थे, कुछ नहीं करते थे, हलचल नहीं होती थी उनके अंदर। बट बाद में व्हेन यू लुक फॉर मोर क्लोजली, हाँ, बाद में वो लोग ये रियलाइज कर दिए कि भाई दे हैव द राइट टू सिंग। हाँ, उनको गाने का अधिकार है, नाचने का अधिकार है कि नहीं। In our own time, though the word folk has achieved the rare distinction of occupying fashionable and unfashionable status simultaneously, just as the effusive floral prints of the radical William Morris now cover genteel sofas, so the revolutionary intentions of many folk historians and revivalists have led to music that is commonly regarded as parochial and conservative। मतलब ट्रिवियल है, ये म्यूजिक को एकदम ट्रिवियल समझ लेते हैं, समझना। And yet, a newspaper columns periodically rejoice folk is hip again, influencing artists, clothing and furniture designers, celebrated at music festivals, awards, ceremonies, and on TV, reissued on countless record labels. Folk is a sonic shabby chic, containing elements of the uncanny and airy, as well as antique veneer। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज है, एंड एरी मतलब स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग है, समझा। Containing elements of uncanny and eerie as well as antique veneer, a whiff of Britain's heathen dark ages. The very obscurity and anonymity, anonymity of folk music's origin opens up space for rampant imaginative fancies. Cecil Sharp, who wrote about this subject, believed that folk songs existed in constant transformation, a living example of an art form in a perpetual state of renewal. One man sings a song and then others sing it after him, changing what they do not like, is the most concise summary of his conclusions on its origin. He compared each rendition of a ballad
to an acorn falling from an oak tree. Every subsequent iteration shows the song anew, but there is tension in newness. In the late 1960s, purists were suspicious of folk songs recast in rock idioms. Electrification, however, comes, such as Vaughan Williams and Holes. There were thunderbolts of inspiration from Oriental mysticism, angular modernism, and the body blow of the First World War, as well as input from the rediscovered folk tradition itself. For the second wave of folk revivalists, such as Yvonne McCall and Al Lloyd, starting in the 40s, the vital spark was communism's dream of post-revolutionary New Jerusalem. For their younger successors in the 60s, who thronged the folk clubs set up by the old guard, the lyrical freedom of Dylan, and the unchanged melodies of psychedelia created the conditions for folk rock's own golden age, a brief Indian summer that lasted from about 1969 to 1971. 4 decades on even that progressive period has become just one more era ripe of fashionable emulation and pastiche. The idea of folk tradition being exclusively confined to oral transmission has become a much looser, less severely guarded concept. Recorded music and television for today's metropolitan generation, where the equivalent of folk memories are seeded. All of the following causes are causes for plurality and diversity within the British folk tradition except क्वेश्चन नंबर 6 मतलब पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब इस पैसेज में क्या बात हो रही मालूम है जो प्री इंडस्ट्रियल बिलीफ था वो बाद में धीरे धीरे मतलब एंटी एंटी इंडस्ट्रियल जो बिलीफ था लोगों का ब्रिटिश लोगों का वो बाद में धीरे धीरे चेंज हो गया है ना और फिर उन लोगों को ये बात रियलाइज हो गई कि हम तो जीते जागते इंसान है तो हमारा राइट है हम गा सकते हैं नाच सकते हैं और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और सारे काम इस तरीके से कर सकते हैं और फिर जो म्यूजिक में चेंजेस आ गए इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया उसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है ठीक है तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस फॉर प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी विद इन द ब्रिटिश फोक ट्रेडिशन एक्सेप्ट all of the following are causes for plurality and diversity within the British folk tradition except पैराडॉक्सिकली फोक फॉर्म्स आर बोथ पॉपुलर एंड नॉन पॉपुलर ये पैराडॉक्सिटी है मतलब एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे तो आंसर इज ऑप्शन ए which of the next question which of the following statements about folk revivalism of 1940s and 1960s cannot be inferred from the passage ऐसा पूछ रहा है cannot be inferred from the passage. Electrification of music would not have happened without the influence of rock music. Rock music के बिना electrification possible ही नहीं था. Question number 8. The author says that folk may often appear a cozy fossilized form because of its nostalgic association with a pre-industrial past. क्योंकि वो लोग प्री इंडस्ट्रियल लोग इसी तरीके से सोचते थे ना फॉसिलाइज मतलब ना पत्थर जैसा बन गए एकदम कोई हलचल नहीं शांति The primary purpose of the reference to William Morris and his floral prints is to show that what is once regarded as radical in folk can be later seen as conformist.
रेडिकल मतलब वो एक अलग तरीके से सोचते थे इनिशियली। स्टार्टिंग में ये सब लोग ब्रिटिश जो फोक है, मतलब ब्रिटिश लोग हैं, वो अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन बाद में वही सारे म्यूजिक के और इसके रूल्स फॉलो करने लगे, ऐसा है। Question number 10. At a conference on folk forms, the author of the passage is least likely to agree with which one of the following views? Least likely मतलब जिस व्यू के साथ ऑथर एग्री नहीं करता है या बहुत कम एग्री कर रहा है। द पावर ऑफ folk resides in its contradictory ability, ये नहीं है। Folk forms despite their archaic origins, folk forms in their ability to constantly adapt to the changing world exhibit an unusual poise and homogeneity with each change. Answer is option C. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।